Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन start करते हैं. And in today's session, we are going to solve again. There was a request from few students कि सर 9618 का variant 22 जरा हमें solve करवा देगा क्योंकि this paper was having a lot of pseudocodes and different things, different questions, जिसको हम लोग क्लास के अंदर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों. वी विल बी सॉल्विंग द होल पेपर वन बाय वन. एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पूरा अपना पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर वन. एग्जामिनर बोल रहा है यू मे रेफर टू द इंसर्ट डॉक्यूमेंट फॉर द लिस्ट ऑफ pseudocodes provided for the functions and operations. So we are going to use the insert document over here as well. The first one, examiner is asking you for the data type. So I think सब बच्चों को ये पता है 4 marks examiner यहाँ पे award कर रहा है आप लोग को. String, integer, boolean, and we are having date. So moving forward. अब ये बता रहा है बच्चों modified or index is greater than 100. So the value of index is 100. So 100 is greater than 100, condition is false, and modified is also false. So overall result will be false. Moving forward, अब ये बोल रहा है length of student space and name. So we have to calculate this. मैंने यहाँ पे calculate करना है. Start करी length बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, because there is a space over here. 9 and name की length क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 and this is also 9. So the total length will be 18. Oh, we have a question. Index 100 कैसे हुआ? कैसे हुआ बेटा? It was given. It was given over here. आप ऊपर देख सकती हैं कि it was given. कि the value of the index was given above. Okay, index plus 2.9 int apply किया गया है. The value of index is 100 plus 2.9, it will become 102.9. So when we will be applying int, so it will become fractional part remove हो जाएगा 102. Now moving further forward, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. In the last part, mid name 1,3. So name, here you go. हमें यहाँ पे पहले character से start करना है, and we need to pick 3 characters. So the result will be cat. Moving forward, आगे बढ़ते हैं. नहीं हसीब बेटा, होता ये कि हम यहाँ पे जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, इधर वो 0.9999 क्यों ना हो, इंट का जब ऑपरेशन अप्लाई होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट इज बीइंग रिमूव्ड. सो वी हैव ओनली 102. so fractional part is being completely removed. Okay, part B. The first operation बच्चों is assignment. The next one if आ गया selection, and while the last one will be iteration. 3 marks. I hope question number 1 is all good. सबको clear होगा यहाँ पे. Moving towards question number 2. Okay.
the number of transitions that result in a different state. We have a question of state transition diagrams. So you can see एक स्टेट से दूसरी स्टेट ये आ गए आप लोग, यहां से यहां आ गए और यहां से यहां आ रहे हैं. So the number of transitions are 3. Number of transitions associated with outputs. So these are the outputs. ये आपके output कहलाते हैं. ये रहा एक output and we are having another output. So we are having only 2 outputs over here. So number of transitions that are associated with the output are 2. ठीक है भाई. The labels that should be replaced with X. So I told you people, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये X का मतलब क्या होता है? This is the start of the state transition diagram. तो X का मतलब है यहाँ पे start. Final state, halting state, मैंने आप लोगों को बताया है जब डबल सर्कल आ जाता है, so that is the final state or halting state, that is S3. Moving further forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब. The following current state is S1 and the following states are being applied and you need to name the output. So कर लेते हैं जरा. We are on S1, low level detected. So we will be moving towards S2. Then low level detected, then again low level detected, then again low level detected, then again low. जितनी दफा भी low level detected हो, you will be staying in S2 state. So number of outputs are only one. सिर्फ एक दफा output हुआ. And current state will be बच्चों S2. So we are done with this state transition diagram question as well. Moving forward. Okay, we have a question. Sir, output वाला re-explain कर दें. Why not? बिल्कुल कर देता हूं. Number of transition associated with the outputs. So ये जो ये बार होती है ना, this bar is, यहाँ पे ये हमारा input आता है. This is called input. अब्दुल्ला. और अगर कोई आउटपुट आ रहा होता है हमारे पास विद दैट पर्टिकुलर इनपुट, सो हम यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड आवर आउटपुट. तो अब वो बोल रहा है इस डायग्राम में कितने आउटपुट्स आ रहे हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे कोई सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है. यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट नहीं है. यहाँ पे इनपुट भी है और आउटपुट भी है. यहाँ पे इनपुट भी है एंड वी आर हैविंग द आउटपुट एज वेल. सो नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 1 and 2. So I hope this sounds clear to you now. Moving forward. Okay. Iman beta, we are solving May June 2021. Variant is 229618. हम पूरा पेपर एक सॉल्व कर रहे हैं बेटा. Now moving further forward, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. अब ये बता रहे हैं एक सिस्टम है being developed to manage book loans in a library. Registered users may borrow books from the library from a period of time. Okay, fine. State 3 items of data that must be stored for each loan. तो बच्चों आप लोग को सिर्फ डाटा आइटम बताने यहाँ पे कि क्या क्या डाटा आइटम आ सकते हैं जब आप लोग एक बुक को क्या कर रहे हैं. Registered user can borrow books for a period of time. 3 data items, data that must be stored for each loan. Manage book loans in a library. ठीक है. So क्या क्या डाटा आइटम बच्चों आपके पास आने चाहिए if you are applying for a book. So I guess return date of book can be one of the data items.
स्टूडेंट आईडी कैन बी वन ऑफ द डेटा आइटम, जो बच्चा बोरो कर रहा है उसकी आईडी पता होना चाहिए, एंड वी कैन ऑल्सो हैव द बुक आईडी. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. बुक कब वापस करेगा, स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी. इसके अलावा भी आपके पास नेम ऑफ द बुक, यस इट कैन बी नेम ऑफ द बुक, बुक आईडी. सो मतलब यहाँ पे ये सब चीजें आप लोग, यहाँ पे एक जर्नल क्वेश्चन है, यू कैन राइट दीज आंसर्स एज वेल. State one item of data that will be required in the library system but does not need to be stored for each loan. तो बच्चों बुक है, लाइब्रेरी है, सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है आपके पास? ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. फॉर ईच बुक इज यूनिक नंबर. तो आप लोन करें बुक को या ना करें, आपको वो ISBN नंबर तो बुक के चाहिए ही चाहिए होता है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास दैट यू कैन राइट ओवर हियर, लाइक यूजर हिस्ट्रीज, स्टूडेंट की हिस्ट्री, कौन सी बुक कितनी ज्यादा लोन के ऊपर गई हुई है, कौन सी बुक कहाँ पे डिस्पैच हुई हुई है, कितने टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, बार कोड, यस वी कैन. तो देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर. One operation that manipulates the data stored for each loan would produce a list of all overdue books. Identify two other operations. One operation that manipulates data stored for each loan would produce a list of all overdue books or data about each loan. Another operation, बच्चों, simple एक journal सवाल है. We can send warning letter to the defaulters जिन्होंने अभी तक बुक रिटर्न नहीं करी. We can see history of book that is on loan. We can also see the history of the user as well, जिसने वो बुक बोरो करी है. We can also see the author. ईजा ने बताया कि सर we can also see the author. Yes, ईजा, we can see the author as well. Fine. Moving forward. मतलब एक बड़ा ही जर्नल सवाल था ये आपके पास. दिस क्वेश्चन आई थिंक एक एग्जामिनर एक जर्नल परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा था कि बस आप लोग को बेसिक एक माइंडसेट क्रिएट हो आप लोग का, कि आप लोग को पता हो कि भाई एक अगर लाइब्रेरी सिस्टम आप लोग डेवलप करना चाह रहे हैं तो क्या बेसिक आइटम्स आर नेसेसरी. ठीक है, ओके. ओ माय फेवरेट वन, एडीटीज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. वो बता रहे बच्चों एक एडीटी का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एडीटी. सो ए, डॉल्फिन, कैट, फिश, एल्क. आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एडीटी. तो बच्चों दिस इज सिंपल. एक हमारे पास ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट है. वी आर हैविंग लिंक्ड लिस्ट. सर ये क्यों नहीं हो सकती? ये क्यों इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर. हमारे पास कोई टेल पॉइंटर नजर नहीं आ रहा. दैट्स व्हाई. सर ये स्टैक क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मुझे टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा. दैट्स व्हाई टॉप ऑफ द स्टैक भी नहीं सकता. मुझे सिर्फ एक पॉइंटर नजर आ रहा है, दैट इज ए, और मेरी लिस्ट एंड हो रही है बी के ऊपर. तो दैट्स व्हाई दिस विल बी लिंक्ड लिस्ट. गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द लेबल ए. तो आप लोग को पता है कहां से स्टार्ट होता है आप लोग का. यू कैन कॉल इट हेड पॉइंटर और यू कैन कॉल इट स्टार्ट पॉइंटर. गिव द टेक्निकल टर्म to B. So बच्चों that is null pointer. Meaning of the null pointer, a pointer that points toward towards nothing.
Complete the ADT after data is being sorted in alphabetical order. हाँ, okay, we have a नहीं असद, this definition, असद एक definition बच्चों हम लोग को यहाँ पे लिख के बताइए सर, null pointer की, can I write this definition that null pointer is the pointer that marks the end of the linked list. This is a very मतलब बहुत ही particular definition हो गई ये, तो you cannot write because null pointer सिर्फ हमारे पास, it's not available in the linked list. स्टैक में भी होता है, क्यूज में भी होता है, बाइनरी ट्रीज में भी होता है, आगे आप और भी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपके पास null pointer is available. So हम journal बात करेंगे यहाँ पे. So we are going to write a journal answer that a pointer that points towards nothing. Okay. So starting with आप लोगों को बच्चों alphabetical order में arrange करना है. So I think the first one, this is your start pointer. लेबल कर दें, अच्छी बात है. स्टार्ट पॉइंटर, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स कैट. कैट का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स डॉल्फिन. डॉल्फिन का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू ABCDE. डॉल्फिन का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एल्क. and elk का pointer बच्चों will be pointing towards fish, and fish का pointer will be pointing towards null. So alphabetical order हो गया बच्चों, A B C D E and F. So this is how we show the movement of the pointers, and examiner will be awarding you 2 marks. ज्यादा करने चाहिए थे भाई, सिर्फ 2 नंबर अवॉर्ड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 अभी आते हैं, एक जर्नल सवाल है, इसके ऊपर आते हैं अभी थोड़ी देर में, एंड में आएंगे. Okay, now we have a question. A student is learning about arrays. She wants to write a program, declare a 1D array. The name of that 1D array is rnum of 100 elements of the data type integer. Assign each element a number, a random number. Assign each element a random value in the range 1 to 200 inclusive. Output and count how many numbers generated were between this range. Write down the pseudocode to represent this algorithm. Examiner is awarding you 6 marks. बच्चों for this random number का एक सवाल आ गया, आप लोग को क्या देखना होगा? You need to see the insert document. आप लोग को यहाँ पे insert का document देखना पड़ेगा. Okay, here you go. Random number, random number, random number. Where are you? Where are you? Okay, here you go. This is the random number formula. This is the random number that is provided in your insert document. ये बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू एंटर करोगे, like 87, and this random number is going to return 35.43. The outer bound is not included. Like this means the maximum number that we can have is 86.99. Okay, RAND, rand. This is the function that we are going to use. ठीक है भाई? So start करते हैं अब जरा.
डिक्लेयर अ 1D एरे और हमें कुछ फंक्शन या प्रोसीजर नहीं बनाना, तो वी डायरेक्टली नीड टू परफॉर्म दिस कोड. लेट्स स्टार्ट. डिक्लेयर rnum. It will be an array 1:100, and the data type will be, of course, integer. No real, Arish, इसने बताया हुआ है कि the data type will be integer, तो how it could be real? एग्जामिनर ने लिख दिया साफ साफ that it will be an real. Oh sorry, integer. मैं तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया भाई. हाँ, assign each element of the value, random value आपको assign करनी है 1 से लेके 200. तो 1 से लेके 200 तक मैं कैसे जनरेट करूंगा? R, the formula will be int rand 200 plus 1. सर ये क्या किया आपने? 1 से लेके 200 कैसे जनरेट किया? देखो, the minimum value that can be generated is 0. तो 0 plus 1, तो मिनिमम रेंज क्या बन गई सर? 1. 1 से लेके कहां तक चलेगा ये आपके पास? द मैक्सिमम वैल्यू, ये इंक्लूसिव नहीं है, तो इट कैन बी 199.99 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू. तो जब आप इसके ऊपर इंट अप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 199, और 199 के अंदर आप जब +1 करेंगे, इट विल बिकम 200. सो द लोअर बाउंड इज 1 एंड द अपर बाउंड इज 200. सो हमने इस रेंज के अंदर अपना नंबर जनरेट कर लिया. अच्छा जी, सो एक काउंटर भी लेना, बिकॉज वी नीड टू काउंट दिस रेंज. सो आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, डिक्लेयर count and index. They will be integer, and initially the count is 0, so zero. Now I put a for loop because I need to perform this task for 100 elements. So for index is equal to 1 to 100. Now I need to generate a random number, and I need to assign to the index of the array. So rnum index will be equal to int rand 200 plus 1. Now I need to check कि इस रेंज में नंबर है मेरा या नहीं है. So let's check this out. If rnum index is greater than equal to 66 and rnum index is less than equal to 173, then I just need to perform the counting stuff. Then count will be equal to count plus 1. And if next index, and at the end of the loop I just need to, इसने बोला था कि output कर देना how many numbers were generated. So output numbers 66 to 173 is equal to comma count. And I think we are done. Examiner is awarding us 6 marks for this code. अच्छा code था, अच्छा सवाल था. दानियाल ने बताया कि सर मुझे रैंडम नंबर का फॉर्मूला समझ में नहीं आया. ठीक है दानियाल, देखो यहां से समझ में आएगा तुम्हें. ये एक बिल्ट इन फंक्शन है. आप इसके पैरामीटर के अंदर जो भी नंबर एंटर करोगे, तो वो 0 से लेके वहां तक
आपका पर्टिकुलर नंबर जनरेट करेगा, बट द आउटर बाउंड विल नॉट बी इंक्लूडेड। लाइक अगर आपने 87 एंटर करे तो मैक्सिमम नंबर कैन बी 86.99। इट्स जनरेटिंग अ रियल नंबर, एक रियल जनरेट कर रही है आपके पास। लेकिन आपके एग्जामिनर ने बोला कि इंटीजर जनरेट करवाओ, इंटीजर सेव करवाओ 1 से लेके 200 की रेंज के अंदर। सो व्हाट आई डिड, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? 0। तो 0 के अंदर जब मैं +1 करूंगा तो इट विल बिकम 1, तो लोअर बाउंड बिकम्स 1। और मैक्सिमम नंबर कैन बी 199.99। so when I'm going to apply 199.99 के ऊपर int अप्लाई करूंगा, it will become 199। और 199 में जब मैं +1 करूंगा तो it will become 200। so my range becomes from 1 till 200। ठीक है, so this is how we apply this formula। आगे बच्चों बता रहे कि स्टूडेंट मॉडिफाई decide to modify the algorithm so that each element of the array will contain a unique value। Describe the changes that the student should need to make to the algorithm। So we can write, we can initialize array elements to 0 when a random number is generated we are going to increment the index of that particular number only। So we can know the count for each number। यूनिक वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे काउंट हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट बी, give the line number containing the example of initialization। Initialization you can see over here, out string is being initialized, line number 7। line number containing the start of a repetition block of code। repeat मतलब लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन सी लाइन नंबर 9। line number containing logical operation I can see, or line number 12। number of parameters in the mid function मुझे वैसे ही याद है खैर 3, लेकिन फिर भी देख लें, where is the mid function, ये रहा। so you can see the number of parameters are 1 2 3, so the total number of parameters are 3 in the mid function। write down a simplified version of line number 12। क्या है भाई line number 12, let's see। if not next char less than a or next char greater than z, then out string is equal to out string plus and। अच्छा ठीक है, नोट का लगा के और लगा रहे, वो लेस देन करवा रहे, बड़ा मुश्किल टास्क लिख रहे, सिंपली लिख दे इफ, जो हम लोग लिखते हैं अपनी, नेक्स्ट char should be greater than equal to a and next char should be less than equal to z। That's it। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला रखें आप लोग कि अगर नेक्स्ट चार ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड नेक्स्ट चार शुड बी लेस देन इक्वल टू सी। So this completes our question number 5 as well। Moving forward, question number 6।
examiner is awarding us 8 marks. 8 number award कर रहा है हमारा examiner for this particular question. Let's perform this question as well. A procedure count vowels to be called with a string containing the alphanumeric characters as parameters. Output and count the number of occurrence of each vowel. Fine. A, E, I, O, U in the string. Output and count the number of occurrences of other alphabetical characters as well as a single total. ठीक है, fine. The string may contain both uppercase and the lowercase characters. Each count value will be stored in a unique element of a global 1D array called char count of the data type integer. This array contains 6 elements. Okay. Okay. So I think we are good. Let's write down the procedure on count vowels. 8 नंबर तो ज्यादा अवॉर्ड करा है, छोटा सा कोड है मेरे ख्याल से. दिस इज अ वेरी स्मॉलर कोड. सो खैर चले स्टार्ट करते हैं. प्रोसीजर count vowels. It will be called with a string containing the alphanumeric characters as parameter. So what we can name string parameter का नाम मुझे अच्छा क्लिक नहीं कर रहा माइंड में. So can anyone recommend me a name? कोई बच्चा अगर मुझे recommend कर दे अच्छा सा नाम. What I can go with the name of the parameter. Okay, we have different examples. Alpha num char. Oh my god, शामिर तुम्हारा नाम तो ऐसा है ना. अशर ने अच्छा किया in string. In string sounds good. So Bible in string, and it will be of course a string, and of course function is not procedure does not return anything, तो हम लोग आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे. Now the 1D array char count, so I need to declare this. I don't need to declare, I need to initialize the values with 0 initially. So I declared a variable, declare index as integer for index is equal to 1 to 6, because this array is containing 6 elements, 1 to 6. Char count index is equal to 0. Next index. So all the elements of this particular array are set to 0. सारे चारों एलिमेंट मैंने क्या करवा दिए बच्चों, 0 से इनिशियलाइज करवा दिए. नाउ अब मुझे अपना लूप चलाना है. जितने भी कैरेक्टर्स हो इन दिस वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इन स्ट्रिंग, तो मुझे अपना लूप आगे तक चलाना है. 1 by 1 आई नीड टू मूव कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. सो आई पुट अ फॉर लूप अगेन. फॉर index 1 to length of in string. तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे 1 से लेके वो लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग तक चलता रहेगा. नाउ आई नीड टू पिक द ओनली 1 कैरेक्टर. अब मुझे एक कैरेक्टर पिक करना है. I forgot to declare that variable. Oh my god.
CH is equal to mid. I need to apply this on in string. I need to start from index and I need to just pick one character. I haven't declared index. Oh sorry, CH. ये CH मुझे डिक्लेयर करना होगा बच्चों ऊपर. मैं भूल गया भाई ऊपर डिक्लेयर करना. ठीक है, so we need to declare this. Now I need to check this CH. तो एक बच्चा अपनान कब से बोल रहा था सर केस ऑफ करवा दे, तो केस ऑफ यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगी बच्चों. केस ऑफ जिसके ऊपर केस अप्लाई करना है, आई नीड टू अप्लाई केस ऑन CH. अब अगर CH की, अच्छा आई नीड टू डू वन मोर थिंग. एक और चीज बच्चों करनी होगी. सर क्या करना होगा? इस CH को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा. क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं बच्चों बिकॉज ने बताया द स्ट्रिंग में कंटेन अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स बोथ. तो आई नीड टू कन्वर्ट, मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे. ठीक है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज इंसर्ट का डॉक्यूमेंट देखो अपना. हियर यू गो. टू लोअर. टू लोअर क्या करेगा? पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. तो आई थिंक दैट्स द बेटर ऑप्शन कि मैं अपने स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करवा लूं, ताकि फिर बार बार मुझे चेक करना पड़े, मुझे अप्लाई ना करना पड़े. Declare CH and lower string, and they will be string, or lower string will be equal to two lower and I applied on in string. तो अब मेरा पूरा स्ट्रिंग बच्चों क्या हो गया? लोअर केस के अंदर स्टोर हो गया. नाउ आई विल बी यूजिंग दिस ओवर हियर. मैं यहाँ पे अब लोअर स्ट्रिंग यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ इन स्ट्रिंग, ताकि अब मेरे कैरेक्टर्स क्या हो गए? अगर कैपिटल लेटर भी होगा तो वो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा. अब मुझे वॉवेल्स काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो केस ऑफ CH आई अप्लाई द केस. अगर A है देन चार काउंट इंडेक्स, चार काउंट 1 is equal to चार काउंट 1 प्लस 1. तो A की काउंटिंग मैंने कहां पे स्टोर करवा दी? पहले इंडेक्स के अंदर. सिमिलरली B की काउंटिंग हम लोग स्टोर कर लेंगे इन सेकंड इंडेक्स. सिमिलरली C, ओप सॉरी B नहीं, वॉवल्स AE. Then for I counted the value in third index of the array. For O, I counted in fourth index. For U, I counted in the fifth index.
और इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर होगा तो आई विल बी काउंटिंग इन, अदरवाइज I will be counting in the third index. 6, 6 and so on. और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड केस. And this will be next index. Okay, we have a question. Let me check. Sir, why did we realize char count under the loop? चार काउंट को हम लोगों ने इसलिए इनिशियलाइज करवाया बेटा नियान, बिकॉज हमारे पास इनिशियली जब भी कोई भी चीज आपको काउंटिंग करनी हो तो काउंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई. तो मैंने अपने चार काउंट को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करवा दिया था. ठीक है, दैट्स व्हाई. बाकी तो आई थिंक सबने नाम ही बताए हुए हमारे पास यहाँ पे, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना. सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अब एक एक कैरेक्टर पिक करते गए. मैंने पूरे स्ट्रिंग को अपने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि मुझे सिर्फ A E I O U जो अल्फाबेट्स को, वॉबल्स को चेक करना है, तो वो लोअर केस में ऑलरेडी अवेलेबल हो. और इसके अलावा कोई और आपके पास होगा तो वो मैं 6 इंडेक्स के अंदर मैंने काउंट उसको करता रहा. आखिर में बोल रहा है बच्चों, काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अदर अल्फाबेट्स, काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंस फॉर ईच वॉबल इन द स्ट्रिंग. बस आपको अब आउटपुट करवाना है, दैट्स इट, एंड वी आर डन. So we have this much space. I think that's more than fine. Output. Number of for A. So that was stored in. एक सिंपली फॉर लूप लगा के बच्चों हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर वन टू सिक्स. आउटपुट char count index, next index, and procedure. So this was the code. बच्चों थोड़ा सा लेंथी कोड था. कोड मुश्किल नहीं था, कोड बस लेंथी था आपका. यहाँ पे कोड was easy but it was too lengthy. Okay, we have two questions. सर क्वेश्चन में लिखा था कि इट विल बी स्मॉल कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें ये भी तो समझ सकते हैं कि इट कुड बी अपर केस. अब वो आशिर बेटा अपर केस हो या लोअर केस हो, आपका वॉवल जो है वो अपर केस हो या लोअर केस हो, मैंने पूरे इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, टू लोअर. और मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला भी मैंने किसके ऊपर लगाया, लोअर केस के ऊपर लगा दिया. यू कैन गो विद, हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो, पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो और फिर तुम यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई कर दो. तो इट्स टोटली अप टू यू, कर सकते हो ये चेंजेस. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया. सेकंड वी हैव अब्दुल्ला ने सवाल किए, सर CH. एहसन, ये बड़ा एहसन फैजान तुम्हारा काफी वियर्ड क्वेश्चन है भाई, कि मिड का फंक्शन क्या करता है. मिड का फंक्शन अगर देखो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे लोअर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करा,
तो ये क्या करेगा, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। तो लेट्स से मेरा स्ट्रिंग था मैक CS 114। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पहला कैरेक्टर पिक करेगा और ये CH के अंदर स्टोर कर देगा। फिर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और एक कैरेक्टर पिक करेगा, तो दिस मींस A पिक करेगा। देन ये थर्ड, इंडेक्स वैल्यू थर्ड हो जाएगी, ये थर्ड कैरेक्टर से पिक करेगा, K उठाएगा, फिर ये स्पेस उठाएगा, फिर ये C उठाएगा, फिर ये S उठाएगा। तो ये एक एक कैरेक्टर क्या करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी एंड दिस बिट फंक्शन इज गोइंग टू पिक वन कैरेक्टर और वो CH के अंदर स्टोर करता रहेगा। और फिर मैं वो CH को कंपेयर करता रहूंगा कि क्या वो वॉवेल है या वो कोई एनी अदर कैरेक्टर है, बाय अप्लाइंग सिंपल फॉर्मूला फॉर केस ऑफ, अगर CH की वैल्यू A हो तो पहले इंडेक्स में काउंटिंग हो जाएगी, E हो तो एंड सो ऑन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे अब, एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोसीजर फॉर्मेट नेम। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, we need to create a procedure that is named as format name. Is called with a string containing words, spaces as its parameter. In this context, a word is any sequence of characters that does not contain a space character. Create a new formatted string from this string with the following requirements. Any leading spaces are removed before spaces before the first word. Any trailing spaces removed, spaces after the last word. Any multiple spaces between the converted any multiple spaces between words converted to a single space. Okay, any characters, all characters converted to lower case. Fine. The format name procedure has been written in a programming language and it is tested using the black box testing. Give a test string that could be used to show all 4 formatting requirements that have been applied correctly. Give a test data string that could be used to show that all 4 formatting requirements have been correctly applied. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सर यहाँ पे। सो स्पेस के लिए बोला ये सिंबल यूज कर लेगा, तो मैंने स्ट्रिंग बच्चों बताया, मैंने कैपिटल भी कर दिया लेटर्स को, मैंने पहले स्टार्टिंग में स्पेस भी दे दी, देन मैंने दूसरे वर्ड में 2 स्पेसेस दे दी CS, और लास्ट वर्ड के बाद भी मैंने क्या कर दिया, स्पेस दे दी। सो लीडिंग स्पेसेस दे दी, आखिर में स्पेस दे दी, मल्टीपल स्पेसेस दे दी, और लोअर केस के अलावा भी मैंने लेटर लिख दिया। तो बच्चों अब इस स्ट्रिंग के ऊपर चारों रूल्स क्या होने चाहिए, दे शुड बी अप्लाइड, all the 4 rules should be applied on this space, on this string. पहला बेटा देखिए, इससे बताया कि आपके पास ना ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो आपके पास फाइनल वर्जन होगा कोई भी स्ट्रिंग के अंदर लीडिंग स्पेस नहीं होनी चाहिए, आखिर में स्पेस करेक्टर नहीं होना चाहिए, बीच में मल्टीपल स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, और सारे करेक्टर लोअर केस में होनी चाहिए। लेकिन दैट इज द फाइनल वर्जन। वो बोले एक ऐसा स्ट्रिंग बताओ जिसके ऊपर टेस्ट डाटा आप लोग जब अप्लाई करें तो चारों रूल अप्लाई हो। तो मैंने स्टार्टिंग में स्पेस दे दी, मैंने एंड में स्पेस दे दी, मैंने बीच में मल्टीपल स्पेसेस दे दी, और मैंने कैपिटल लेटर्स भी लिख दिए।
तो परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर कुछ भी लिख सकते थे आप लोग यहाँ पे, लेकिन ये चारों रूल उसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए थे। ठीक है, ओके फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, द फॉर्मेट नेम प्रोसीजर शुड assign a value to the global variable f string. There is a fault in the program, which means that the assignment does not always take place. Explain two ways of exposing the fault. वो बोल रहे बच्चों, एक ग्लोबल वेरिएबल था एफ एन स्ट्रिंग, इसको असाइनमेंट नहीं कर पा रहा ये प्रोसीजर, बोले किस तरह फॉल्ट को आइडेंटिफाई करोगे? So there are multiple reasons, multiple methods to identify the fault. We can have a dry run. We can have a walkthrough through the code. We can apply single stepping. We can apply window watch. तो कोई भी बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, दीज आर द मेथड्स यू कैन डिटेक्ट द एरर्स, क्या आप चेक कर सकते हैं। हाँ, यू कैन ऑल्सो अप्लाई टेस्ट दैट एज वेल। ओके जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, बाकी सारे कर लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छुड़वाया है बस, खैर वो तो बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। यस, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जरा इस लास्ट क्वेश्चन को भी परफॉर्म कर ही लेते हैं, लेट्स सी। अब ये बता रहे द प्रोग्राम नीडेड टू टेक द स्ट्रिंग कंटेनिंग अ फुल नेम, प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ इनिशियल्स। मल्टीपल बातें कर रहे हैं, बोल रहे देयर इज अ 1D एरे, जो मेन पॉइंट है वो मैं आ रहा हूं डायरेक्ट। 10 एलिमेंट्स का 1D एरे, इग्नोर लिस्ट, and these are the global variables. Fn string is also a global variable that is used to store full name string. Assume that each alphabetical character in the full name may string either uppercase or lowercase. Full name string contain at least one word. Write down the pseudocode for the module ignore word. कितने number? 5 number. Ignore word, here you go. Called with the string parameter representing a word, searches for the word in the ignore list array, return true if the word is found, otherwise return false. Oh my god, a very easy question. Let's perform this. Write down the module, so it will be a function because return करनी है value. अब मैं एक साथ ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं भाई। फंक्शन ignore word by well word string, and the function is going to return boolean. Returns boolean. Now I declare two variables. Declare found, it will be boolean, and declare index, it will be integer. Now I initialize the values. Found should be initially set to
false, and index will be initialized to 1, while found is equal to false, and the elements in the array were 10, so index should be less than equal to 10. Now I check for the first element if the name of the array was ignore list array. If ignore list, नाम क्या है भाई array का पूरा देख लूं मैं एक दफा. Ignore list. If ignore list index is equal to the word I'm searching for, this is the word, this means मेरा element मुझे मिल गया, then found will be equal to true. Else I need to move towards the next word. Index will be equal to index plus 1. And if and while return outside the loop, return found. अगर मेरा लूप खत्म हो जाएगा और फाउंड की वैल्यू अगर मुझे मेरा एलिमेंट नहीं मिला तो द वैल्यू ऑफ फाउंड विल रिमेन फॉल्स और मैं रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स. वरना बच्चों क्या वैल्यू, अगर मेरा एलिमेंट मिल गया द वैल्यू ऑफ फाउंड विल बिकम ट्रू एंड आई विल बी रिटर्निंग ट्रू. और यही पे मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड फंक्शन. तो एक आसान सा सवाल था हमारे पास, that we need to perform the linear search over here. Now examiner is awarding us 5 marks for this part. जी आशिर, what's your question बेटा, पूछो. इंडेक्स इज इक्वल टू 10 क्यों नहीं लिख सकते थे? 10 10th इंडेक्स भी आपको चेक करना है ना. while लूप 10th और हाँ 10th इज इक्वल टू, अगर 10 कर देते, अगर इज इक्वल टू 10 कर देते, सबसे पहली वैल्यू इंडेक्स की क्या है 1. मैं यहाँ पे चेक करता 1 इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होती, फॉल्स. और फॉल्स के ऊपर आपका while लूप क्या होता है, एंड हो जाता है. लूप एंड हो जाता है, खत्म. लूप चलता ही नहीं, एंड हो जाता है ना. जब 11 होगी इंडेक्स की वैल्यू तो कंडीशन फॉल्स होगी, फिर लूप एंड होगा, बिकॉज इन माय एरे आई वाज हैविंग 10 एलिमेंट्स, सो आई नीड टू चेक फॉर ईच एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. राइट डाउन द सूडो कोड फॉर गेट इनिशियल्स. 8 marks. Last question, let's see. Get initials. Okay. Processes बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा it will take time. Let's see. लास्ट क्वेश्चन है, फोकस करें जरा यहाँ पे. अब हाँ मूसा शाकिर, वी कैन गो विद दैट. मूसा बता रहे सर लेस देन 11 लिख सकते थे. हाँ यू कैन. लेस देन 11 नहीं, लेस देन 10, लेस देन 11. हाँ लेस देन 11, 10 के ऊपर वो चलता है. 11 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स होती, लूप एंड हो जाता. हाँ तो लेस देन 11 भी आप लिख सकते थे. ठीक है. नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन. processes the sequence of words in full name one word at a time. Calls get start, get word, ignore word to process each word to form a new string. Output the new string. अच्छा जी, न्यू स्ट्रिंग आउटपुट करवा रहा है भाई ये. स्टार्ट सबसे पहले बोल रहे गेट स्टार्ट को कॉल करेगा. गेट स्टार्ट क्या करेगा, कॉल विद एन इंटीजर एट इस पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ words in fn string. Return the character position of the word in the fn string. Return -1 if that word does not exist.
ठीक हो गया। तो बच्चों हर वर्ड का मैं यहाँ पे एंटर करूंगा पहले 1, तो मुझे ये रिटर्न कर देगा इसका पहले वर्ड का इंडेक्स, दैट विल बी 1। फिर मैं यहाँ एंटर करूंगा गेट स्टार्ट के अंदर 2, तो मुझे इसका सेकंड वर्ड का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। फिर मैं यहाँ एंटर करूंगा 3, तो मुझे थर्ड वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। देन आई नीड टू चेक, फिर मुझे ये चेक करना होगा कि ये कैरेक्टर क्या ये कैरेक्टर इग्नोर लिस्ट का पार्ट तो नहीं। अगर इग्नोर लिस्ट का पार्ट है तो मैं उसको उसका पहला कैरेक्टर पिक नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो इग्नोर लिस्ट का पार्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट द वर्ड्स लाइक दिस। अगर मैं एंटर करता हूं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सो द वर्ड विल बी आईडी। इफ आई एंटर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सी। गेट वर्ड क्या करेगा, कॉल विद द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड इन एफएन स्ट्रिंग एंड as its parameter. Return the word from fn string. For example, if fn string contains the string hot and cold, और अगर आप पहला कैरेक्टर एंटर करते हैं लाइक 9, तो आपको पूरा वो कोल्ड रिटर्न करवा देगा। गेट स्टार्ट, गेट वर्ड एंड इग्नोर वर्ड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट करते जरा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे। So this will be a procedure. So let's start. This will be a procedure. And the name will be get initials. No parameters are required. I defined few variables. Declare new string declare word as a string and I declare few variables as well. Word का number and index as integers. Now starting में मैंने word num बता दिया, word num will be set to 0 and new string को भी मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, that will be null. I put a repeat until loop over here. Repeat word num is equal to word num plus 1. अब word num की वैल्यू क्या हो गई, it becomes 1. पहले 0 थी, अब word num की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। अब मैंने यहां से ना इंडेक्स लिया, मैंने बोला इंडेक्स is equal to get start. This was a built-in function और ये वर्ड नंबर लेगा एज अ पैरामीटर, तो मैंने वर्ड नंबर बोल दिया 1। तो वर्ड नंबर 1 का जो इंडेक्स है, ऑफ कोर्स वो खैर 1 ही होगा, तो वो मुझे क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। वो मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा पहले वर्ड का इंडेक्स।
अगर वर्ड नंबर 2 होगा तो वर्ड नंबर 2 का इंडेक्स आ जाएगा, अगर वर्ड नंबर 3 तो वर्ड नंबर 3 का इंडेक्स आ जाएगा, एंड सो ऑन. So this is going to return me the index of the word, कि वो वर्ड कहां पे एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर ये फंक्शन देखिए लिखा हुआ यहाँ पे गेट स्टार्ट, ये -1 भी रिटर्न कर सकता है. जब -1 रिटर्न करेगा दिस मीन्स कि अब ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता मेरे fn स्ट्रिंग के अंदर, मेरे फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो अब मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ index is not equal to -1, then word is equal to get word, और मैंने यहां पे बता दिया इंडेक्स. इंडेक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स बच्चों वॉज वट एवर द वैल्यू वॉज. तो मैंने पूरा वर्ड क्या कर लिया, यहाँ पे ग्रैब कर लिया. मैंने पूरा वर्ड क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया. अब अगर ये वर्ड इग्नोर लिस्ट के अंदर नहीं है, तो मैं इसका पहला लेटर क्या करूंगा, स्टोर करवा लूंगा. तो मैंने सिंपली यहां पे चेक कर लिया, इफ इग्नोर वर्ड is equal to false, then new string will be equal to new string concatenating, अपर केस में करना है हमें कन्वर्ट, यू केस लेफ्ट मैंने अप्लाई किया बच्चों, किसके ऊपर अप्लाई किया, वर्ड के ऊपर अप्लाई किया. आई जस्ट नीड वन कैरेक्टर. तो मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके क्या करवा लिया, स्टोर करवा लिया. अब बाकी चीजें सारी क्या कर दो भाई, बंद कर दो. एंड इफ और ये कब तक चलता रहे, अनटिल जब तक इंडेक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1. तो अब मेरा लूप चलेगा, वापस चलेगा. अब मैं क्या करूंगा, वर्ड नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अब मैं सेकंड वर्ड का इंडेक्स पिक करूंगा, मैं चेक करूंगा अगर ये नल के इक्वल नहीं है तो मैं वो पूरा वर्ड पिक करूंगा. मैं चेक करूंगा ये वर्ड अगर इग्नोर लिस्ट में नहीं है तो इसका पहला लेटर क्या करो, कॉन्कैटिनेट कर दो अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके. और ये मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू -1 ना हो जाए. जैसे इंडेक्स वैल्यू -1 होगी बच्चों, मैं यहाँ पे आउटपुट करवा दूंगा, आउटपुट न्यू स्ट्रिंग, और यहीं पे मेरा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड प्रोसीजर. एन एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा देखिए, मेन जो चीज थी इस क्वेश्चन में समझने वाली, दैट यू नीड टू हैव अ लुक फॉर दिस पार्ट, और आपको ये बिल्ट इन फंक्शन यूज करना आने चाहिए थे. तो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड किया करें व्हाइल लुकिंग एट द अदर क्वेश्चंस. क्या अब आपको एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, वो आपको यूज करना है. दैट वाज गेट स्टार्ट, गेट वर्ड, इग्नोर वर्ड. ये तीनों बिल्ट इन फंक्शन आपको सिर्फ क्या करने थे, यूज करने थे. कि किस तरह यूज करना है, कि -1 कब रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन. सो आज इसको बच्चों हम लोग बस अब यहीं तक होल्ड करेंगे, एंड इंशाल्लाह और अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम लोग, मैं आप लोग को कुछ और फर्दर पासिबल क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा, और कुछ अब मैं अपकमिंग क्लासेस के अंदर एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिकल्स भी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. सो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.